Hello everybody, welcome back to my channel, and in this class we will be doing this topic which is known as atmosphere. Now today we will be doing this chapter. It is a very nice and interesting chapter and I hope that you all will like this chapter. Now I want you all to know that I am doing this for class 7th ICSE, and the book we are referring to is known as Cambridge Connection Geography, and I'm giving full credits to it. The book's name is Cambridge Connection Geography, second edition. It's written by Sangeeta Sharda, series editor Rashmi Rosario, and it is published by Cambridge University Press. So now let's start. So basically, it's a very simple and clear topic that we all know that Earth is the only planet where life is known to exist, right? So क्या होता है? We only know that like there are so many planets, right? But out of them in the space there are so many planets, but out of them only Earth जो पृथ्वी है वहाँ पे ही life exist करता है, right? So why does life only exist on Earth? That is solely because of atmosphere. So if atmosphere was absent in our in our Earth, so there would be no existence of life on Earth. Then we humans, any living organism which uses up carbon, which uses up oxygen, which uses up water, would not be present, right? And life would not be possible. Because why? Because see, all the living organisms, what is their prime focus? What do they primarily need for? What do they need to consume? You need to consume oxygen, you need to consume water. Now if atmosphere was not there, oxygen would not be available, because oxygen is itself a part of the atmosphere. None of water would be, because oxygen is the one who helps in the water cycle. So then we could not exist, right? Because for the existence of life we need oxygen and water. If atmosphere was absent, we did not have oxygen and water, देन कहाँ से हम एग्जिस्ट करते? हम एग्जिस्ट ही नहीं करते. तो ये बात समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो अर्थ पे जो लोग, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, उसका एक लौता रीज़न है एटमॉस्फेयर. हाँ, और भी बहुत सारे रीजन्स है, बट इफ़ यू सी आउटसाइड से अगर सी करोगे तो यू विल फाइंड दैट लाइक समराइज्ड वे, atmosphere is the reason why people can actually exist on this planet Earth, because atmosphere has oxygen, atmosphere has water, and we need that, right? If it was absent, वो भी नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता, पानी नहीं होता, हम कहाँ से एग्जिस्ट करते? नहीं. Alright, next line. So what is atmosphere primarily? We have been reading since our childhood. यहाँ कुछ समझाने की तो बात नहीं है, but I'll just do a reading. The atmosphere is an invisible layer of gases which covers the entire planet. Now suppose if I say, okay, I take my Earth. If I say, see, this is the Earth. Yes, if I say this is Earth and this is Earth, something is surrounding it. This surrounding thing, that is known as atmosphere. So this is Earth, something is surrounding it. Now this one is your atmosphere. Can you actually see atmosphere? You cannot see atmosphere. So hence they say that atmosphere is fully invisible layer of gases. So there are many gases like CO2, O2, N2, HE, AR. These all gases. I'm telling the chemical formula. We'll get into details later. So basically these gases, they comprise of atmosphere, and they are invisible. You cannot see it, you cannot taste it, you cannot smell it, anything. And they are only covering the entire planet Earth, but you cannot see it. Alright, so what is atmosphere? Atmosphere is an invisible layer of gases that surrounds the Earth. Something very important out there, the atmosphere also acts as a large filter that protects the Earth from harmful radiations of the sun. Now isko samajhne ke liye I'll tell you one thing.
Harmful radiations of the sun. If you have read in class 5 ICSE, then you might have remember there are some rays known as UV rays, that are ultraviolet rays. Then there are gamma rays. Okay, these rays are there. Then there is white light, there is infrared rays. Now all these you see UV rays, then your gamma rays, then one more rays is there, solar, then that one X rays. So UV rays, gamma rays, X rays, they are harmful for earth, and they are produced by the sun. But at the same time, with this three, earth also produces two more, that is white light and infrared rays. White light and infrared rays अच्छे हैं, they are essential, they are crucial for existence, white light, infrared rays. But solar radiation जो कि है गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, वो सब अच्छे नहीं हैं. तो व्हाट द एटमॉस्फेयर डज, इट एक्ट्स लाइक अ लार्ज फिल्टर कभी देखिए छन्नी. So basically, when your mother maybe pours out the tea into a cup, she uses a filter like a channi. Alright. So when you pour the tea into it, all the things that you don't need in the tea, they stay up, and the things that you actually need in the tea, they go down. Like that tea leaves, that are not really gone, they stay up during the purification of water also. So hence, atmosphere acts as a large filter. It filters those harmful solar radiations so that it does not reach earth, because harmful solar radiations like UV rays, gamma rays, X rays, UV rays, they can cause skin cancer also, which is a very devastating, dangerous disease. So you shouldn't have it. So atmosphere is acting as a large filter. Of course, it is not letting your UV rays, the harmful solar radiations, enter into the earth. So that's why. It also prevents drastic temperature changes on the earth. Means, suppose the bitterly cold nights and the endless, hot days, summer, cold night is so cold, and the night is so cold, the day is so hot. So that is known as drastic temperature change. Okay, there are temperature extremes. Atmosphere also prevents that. So atmosphere prevents, or you may say reduces, drastic temperature changes. And atmosphere is also important for precipitation, and it plays a crucial role in the hydrological cycle, or you may say the water cycle. Now what is precipitation? We all know when water comes down. So this is maybe the earth's surface. Now earth's surface and many lakes, ponds, this lakes, ponds water, it is evaporated with the help of sun's rays. Now when it goes up, it condenses to form clouds. The clouds, when they get very heavy, they are loaded, they precipitate. Okay, they burst out in the form of rain. It can be in the form of rain. Raining is something else, precipitation is something else. Raining includes only the bursting out of the clouds in the form of rainwater, in the form of water. But hail, sleet, snowfall, they are also forms of precipitation. But water is not coming down, water is not precipitating there in the form of water, it is precipitating in the form of something else. But basically, now you know what is the meaning of precipitation. It is the returning of the water from which is evaporated from the earth's surface. So it's like to and from the earth's surface the water is going, and to the earth's surface when it comes, it is known as precipitation. When it goes from the earth's surface to the sun, it is known as evaporation. Alright, so atmosphere is very important for that also. So it maintains a very much adequate quantity of water. Mainly the water vapor does this. We will study later in this chapter only. Now protective uses. What are the protective uses? How atmosphere really protects us. You can basically, if you look from a very keen knowledge, only this paragraph is very important for the significance of the atmosphere. If you try to focus on many details, you have protective uses, you have miscellaneous uses, many more. Okay.
Now, let's see protective uses. Different layers of the atmosphere absorb harmful solar radiations such as gamma rays, UV rays, ultraviolet rays, gamma rays, X rays. Thus, it acts as a shield. So, it basically acts as a filter and a shield. So, it filters all the bad rays like gamma rays, X rays, UV rays, ultraviolet, maybe UV rays meaning ultraviolet rays. So there are so many different layers of the atmosphere. Actually, atmosphere has the property of stratification. So it is present in many layers. It has many parts. It has many layers. It is composed. It is structured of many layers. So that we know as stratification. It is the property of stratification, and this property only is the one. These each of the layer. So the different layers in the atmosphere, they play a different distinct role. But the different layers of the atmosphere, they absorb harmful solar radiations. So the different rays in the atmosphere absorb harmful solar radiations such as X rays, gamma rays, ultraviolet rays, and thus it acts as a shield. Now, thermosphere you must have heard for. The one part of thermosphere, it is known as ionosphere. So, ionosphere word may be new for you. So, that's why I just told. The ionosphere and the mesosphere. Mesosphere is another layer. Like we have only exosphere, it is very less known to people. But till thermosphere, we all maybe know. So, basically, thermosphere का एक part होता है ionosphere. तो ionosphere और mesosphere, the ionosphere and mesosphere help in vaporizing cosmic bodies, thus moving to the earth's surface, thus minimizing large scale destruction and heavy damage to life and property. क्या होता है? Have you ever heard about meteors, or you may say meteoroids? तो ये जो होते हैं, ये ऐसे कुछ substances होते हैं which are actually approaching to the earth's surface, and if they crash the earth's surface, now there's going to be heavy devastation. Devastation means there's going to be harm, there's going to be danger to the earth. So this atmosphere, it prevents the coming. So maybe if the this is the atmosphere and this is the earth. If a thing is coming, so atmosphere will stop it. It will make it go. Some layers like the ionosphere, the mesosphere, they do it. Hence, the meteors, meteoroids, maybe like they are mainly known as the cosmic bodies. The ionosphere and the mesosphere, they vaporize these cosmic bodies. So what happens? These cosmic bodies, they are vaporized, and they are turned into gas. They are vaporized. They are turned into vapor, and hence now they can't do any harm to our earth. Huh? Now, if they crash the earth, there will be heavy devastation. There will be heavy damage to life and property. सब कुछ damage हो जाएगा. Alright. So, atmosphere is actually the two layers, ionosphere and mesosphere, are mainly doing the job. They are stopping the meteors, meteoroids, mainly the cosmic bodies. They are vaporizing them. So ionosphere and mesosphere help in vaporizing the cosmic bodies approaching to the earth. This minimizes heavy scale destruction and damage to life and property. I hope these two layers are very clear. Now I'm going slow, but so that you understand. I'm going slow. That's why you guys are understanding, na? Okay, let's go to climatic uses. Now there are mainly two climatic uses. We have already studied about the protective uses, how earth protects us. Only two are there. It protects us from solar radiations, and it protects us from the harmful solar radiations, of course, and meteors and meteoroids means cosmic bodies. It vaporizes. The mesosphere and the ionosphere vaporizes. Studying out climatic uses, it helps in maintaining optimum temperature on earth. तो climatic uses क्या होते हैं? जो एक optimum temperature रहता है हमारी पृथ्वी पे. So like a optimum temperature, if the temperature on earth is suppose 50 degrees Celsius, oh my god. If it's suppose minus 10 degrees Celsius, oh my god, this is too cold, so you'll be freezing out there. 50 degrees Celsius is so hot that you'll nearly melt. You will be in heavy pain. So this is not an optimum temperature. But talk about this 25 degrees Celsius, then suppose 18 degrees Celsius. 18 degrees Celsius is also very much bearable. Bearable means something bearable or
tolerable, means you can tolerate it, you can live in it easily. So that is a optimum temperature. Like for me, 20 degrees Celsius is the very much optimum temperature. 20 to 30 degrees Celsius you can bear. It's a very much optimum temperature, means you feel that no, the atmosphere is only keeping it, it is only maintaining the optimum and the perfect temperature like required for the existence of life. If it was too cold, people would even, they couldn't live. If it was too hot, the same applies. But if there's a adequate, or you say in this language we say, if there was a optimum temperature, then what would happen? Then we would be like, it would be easier for us humans to live, thereby allowing the existence of life forms on it. So atmosphere helps in maintaining optimum temperature on the earth, thereby allowing the existence of life forms on it. Then what is the second climatic uses? Second climatic uses, it sustains various natural cycles. Now what is natural cycles? Actually, if you see natural cycles definition, no need of detailed definition now, but I'll just explain you. Alright, if you take a example, the most one known to us, it's water cycle. Oxygen cycle is something related to biology again. Water cycle is something related to again chemistry. Now water cycle, suppose you say, the process everybody knows. Water is there, it evaporates with sun's rays, okay, then it goes up, then it condenses to form clouds. This is a very primary concept. When you grow up, you will learn more details about it, more complex things. Now this cloud, it condenses and forms cloud. This cloud, when you bhari ho jayega, it will again precipitate in the form of rain, or it will precipitate in the form of snow, hail, anything. So this is known as water cycle. I did not explain it very nicely, because we all know it. We have been studying it since class 3. Third standard. From third standard we are studying it, so that's why. तो ये नेचुरल साइकिल्स कौन सपोर्ट करता है? ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, ये सारे साइकिल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऑक्सीजन साइकिल, व्हेन यू रेस्पिरेट oxygen, only you respirate actually the whole atmosphere, but nose has this sensor which only allows oxygen to go in. Only O2 will go in. You have this oxidation of food and everything, and then it gives out carbon dioxide and many things, right? Then again plants release oxygen which we take in. That is the oxygen cycle, and this is the water cycle. These are very important. This is how you maintain the adequate amount of water or adequate amount of oxygen in nature. So atmosphere is the one who is helping us in sustaining these very natural cycles like oxygen and water cycle, and this is what which is making essential, that is this oxygen cycle, water cycle, they are essential for the existence of life in making Earth a unique planet. Earth is a unique planet. Why? Because it is the only one planet out of these 8 planets, if you consider, Earth is the only planet which will allow the existence of life, which will allow something that breathes. Alright, because it has oxygen, it has water. I've explained very nicely in the beginning of the chapter only. So that's why it sustains various natural cycles such as water cycle and oxygen cycle. Then miscellaneous uses. Now it helps in long distance communication also by transmitting the radio waves back to the earth from the ionosphere. Now if you create vacuum in a place, always remember, if you create vacuum in a place, what will happen? The things will radiate back. Okay, this is known as radio waves, means only you can hear your own sound. It will like if you go to a empty room, nothing furniture is there, you still find itself like echoing, the voice is echoing like that. So basically from the ionosphere, some radio waves from the ionosphere, it transmits from the radio waves, right? So basically what is Earth doing, what is the atmosphere doing? It is helping us in long distance communication by transmitting the radio waves back to the earth from the ionosphere. So some sort of radio waves are coming from the ionosphere which is radiating, or you might say like literally bouncing back, not, but okay, to that some sense, to make you understand, I'll say bouncing back to the earth, so we can hear what is happening in the atmosphere. Basically people who study about the atmosphere, they only do it. Alright, now this is
how atmosphere helps in your long distance communication. So atmosphere helps in long distance communication by transmitting radio waves from the ionosphere to the earth. Now, the spectacular phenomena of ionosphere happen in the auroras happen in the ionosphere. Now, basically, in the thermosphere, like ionosphere is of course a part of the thermosphere. So, in ionosphere, you will find the spectacular vision of aurora. Aurora, if you've seen, I'll just attach a picture over here also. Aurora. I'll show you a picture of aurora. It's in this book only. See, can you see this? Like a beautiful light coming up. This is known as aurora. Okay, so aurora, when it many kinds of colored lights they come in, then that's when auroras are formed like this. So basically in the ionosphere, why it happens, we'll again find out. Actually the original reason is because ionosphere has ions, which forms different patterns of colored lights, which causes the aurora. We will study about it in the chapter only. Then weather balloons, they are also sent up in the lower layers means like the troposphere and all, troposphere. They are sent up, weather balloons are sent up in these places so that we can forecast the weather, we can know the weather upwards. Okay, what is it happening now? With something very important, earth pressure. So the pressure which is exerted by the atmosphere, suppose this is the atmosphere, it exerts, it keeps some kind of weight, it keeps some kind of pressure on the earth's surface, which for 1 centimeter square area it is 1 kg. So 1 kg for 1 centimeter square. So how much for like the full earth? Because 1 centimeter square is of course not the area of the earth. So you just think, so how much is the centimeter square of the earth? Nobody can actually find out what is the area of the earth. Nobody can actually find out very accurately. You just can have a very much approximate value. Now we'll study about the composition of atmosphere. Now we know, I just told you that the atmosphere has many gases. I also told you CO2, AR, HE, O2, okay, and so many more. I told N2, the most abundant one. So I told about these, I told the chemical formulas. Now I will discuss about it in details. Right. So what is the composition of atmosphere? Atmosphere, it is made up of different multiple layers, that is stratification, right? So it is stratified basically. You will have this word stratification later, I believe, in the chapter only, because it's an important word for this chapter, for the atmosphere's characteristics. Anyways, so atmosphere is basically consists of many layers like troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere, all these, ionosphere in the thermosphere. This is the composition because it has several layers, and each of this layer has a specific concentration of gases. Now what are these gases? The gases which are mainly present in the atmosphere are fully colorless, they're fully odorless, have no odor, have no color. Okay, and they only form the air around us. Air around us, there's a chapter in NCERT also where you only discuss about all these composition only. So there are many gases in the air which is around us, but mainly we humans breathe in only oxygen. We'll come to that. So I hope this part is clear to you. Now see, around approximately I can say 99% of the air of the atmosphere has two main gases, that is your nitrogen or N2 and oxygen and O2. Actually nitrogen is the most abundant gas. What do we mean by the word abundant? Present in the मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी, मतलब कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में. तो सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा एटमॉस्फेयर में? कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मिलेगा? आपको नाइट्रोजन मिलेगा सबसे ज़्यादा. क्यों? क्योंकि 100% में से 78% ही नाइट्रोजन ले लेता है. अगर आप इस चार्ट को देखोगे, सी सच अ बिग क्वांटिटी ना नाइट्रोजन इज ओनली टेकिंग. जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस है, मतलब कि ऐसा एक सेकंड भी गैस है जो कि नाइट्रोजन से थोड़ा सा कम अबंडेंट है, थोड़ा सा कम है अमाउंट में, बट सेकंड मोस्ट है, वो है ऑक्सीजन. एक्चुअली अभी आपको ये डाउट हो सकता है, मैम वी रिक्वायर ऑक्सीजन, वी ह्यूमन्स ऑफ कोर्स, हमें तो ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन क्यों है ज़्यादा एटमॉस्फेयर में?
So that is a prime question which I'll be solving today, and it's a very important and a very interesting concept. Why is oxygen more and nitrogen, like why is oxygen less? ऑक्सीजन बहुत आपको डाउट होने ही वाला है कि मैम हमारे एग्जिस्टेंस के लिए ऑक्सीजन तो ज़्यादा ज़रूरी है, पर आप बोल रहे हो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ज़्यादा मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन इज़ ऑल्सो वेरी मच एसेंशियल टू अ सॉर्ट, इट इज़ इवन मोर एसेंशियल देन ऑक्सीजन। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा हम भी नहीं बचेंगे। You'll ask how, ma'am, all the life processes we do not include nitrogen. Of course, but nitrogen is a very part, or it's a very important part of chemistry at least. So basically, क्या होता अगर हमारी दुनिया में नाइट्रोजन नहीं होता? प्राइम क्वेश्चन। अगर हमारी दुनिया में नाइट्रोजन नहीं होता, so plants we wouldn't grow, we also wouldn't grow. Why? We will of course tell you when we discuss nitrogen. Nitrogen is the first only, and why वहाँ पे ही मैं डिस्कस करूँगी क्यों ऑक्सीजन कम है और नाइट्रोजन ज़्यादा है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, तो हम वो सीखेंगे। अभी ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर सीखेंगे जबकि हम वहाँ पे जाएंगे, नाइट्रोजन के सेक्शन पे जाएंगे। थोड़ी देर बाद ही आएगा वो, ये रहा, जब हम डिटेल्स में सारी एटमॉस्फेरिक गैसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%। ये आपको लर्न करना है परसेंटेज, ये आ सकता है, बहुत ही श्योर एक क्वेश्चन है 1 मार्क का। और जो यह तो 99% बनाता है ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और जो 1% बाकी है वहाँ पे बहुत सारे गैसेज रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रहता है आपका 0.0402%, आर्गन रहता है आपका 0.9%, ताकि इसलिए हम आर्गन को कहते हैं एटमॉस्फेयर में थर्ड मोस्ट अबंडेंट गैस। ठीक है, बट आर्गन ज़्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, शॉकिंग फैक्ट एक्चुअली। वाटर वेपर होता है हमारे यहाँ पे, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, मतलब कि सारे जो इनर्ट गैसेस हैं वो भी होते हैं। हीलियम, आर्गन, ओके, दीज गैसेस आर ऑल्सो प्रेजेंट। पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक होता है, डस्ट होता है, ऑफकोर्स स्मोक और डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, और बहुत सारे बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स जो कि फ्लावर से होता है, पोलन ग्रेन्स। I think in class 6th you have studied in first chapter biology about pollen grains. So pollen grains भी होते हैं. Alright. Now something that you really need to understand. This whole thing, these 2 paragraphs are damn important. Let me break down and explain these both to you. Atmosphere is thicker and heavier near the surface of the earth. मतलब कि अगर आप अर्थ के जितने पास रहोगे, आप एटमॉस्फेयर उतना मोटा होगा, उतना भारी होगा, और उतना ही हैवी होगा, और उतना भी डेंस होगा। जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर के लेयर्स, जैसे सपोज ट्रोपोस्फेयर है सबसे लो लेयर, फर्स्ट लेयर, सबसे लो लेयर जहाँ की ऑक्सीजन है, सो वो सबसे डेंस लेयर है, वो सबसे हैवी लेयर है। वाई? बिकॉज इतने सारे गैसेस है वहाँ पे, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे गैसेस है ट्रोपोस्फियर में। और वाटर वेपर है इसलिए तो दिस वन वर्क्स, दिस थिंग, दिस वेदर फिनोमेना। ओके, सो दैट्स वाई। सो जितना आप एटमॉस्फेयर के अंदर रहोगे, ठीक है, जितना आप अर्थ सरफेस के नियर रहोगे, उतना आपको लगेगा एटमॉस्फेयर हैवी है, एटमॉस्फेयर डेंस है। जितना आप एटमॉस्फेयर के एकदम से, आप जब एकदम एग्जॉस्फेयर पे चले जाओगे ना, सो एग्जॉस्फेयर आपको लगेगा वो सबसे कम डेंस लेयर है, सबसे लाइट लेयर है। तो जितना आप दूर जाओगे एटमॉस्फेयर से, जितना आप ऊपर जाओगे उतना डेंस नहीं होता जाएगा, जितना आप नीचे जाओगे उतना डेंस होता जाएगा। ओके, so as you move upwards from the ground, air becomes less dense. क्यों? Actually जो 99% एटमॉस्फेरिक मास है, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक मास? एटमॉस्फेयर का वेट, एटमॉस्फेयर के गैसेस का जो वज़न होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर के फर्स्ट 31 किलोमीटर्स अप्रॉक्स में ही दिखता है, उसके बाद नहीं दिखता। 99% जो आपका वज़न है एटमॉस्फेरिक गैसेस का, एटमॉस्फेरिक मास, वो अर्थ सरफेस से एकदम फर्स्ट 31 किलोमीटर्स में भी अटका हुआ है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अच्छा, ओके, अर्थ मैग्नेटिक
Earth's magnetic field protects the atmosphere from solar winds. So basically Earth has its own magnetic field which is protecting the Earth from solar winds. Now why are we not attacked by solar winds? Because the Earth has a magnetic field. It keeps on pushing the solar winds so that they cannot come to us. You know, there's a Earth's magnetic field also from physics, you have learned already. Earth has a north pole and a south pole, but actually if you see, sorry, yes, scientifically if you see Earth, it has this south pole, north pole. Yes, उल्टा होता है. Magnetic जो poles होते हैं वो उल्टे होते हैं, but for people to understand we say सेम होता है, बट एक्चुअली साइंटिफिकली उल्टा होता है. साउथ पोल ऊपर होता है, नॉर्थ पोल नीचे होता है, फॉर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, फॉर अर्थ्स मैग्नेटिक पोल्स. तो ये जो अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स है, दैट इज व्हाट विच इज प्रोटेक्टिंग द अर्थ फ्रॉम द सोलर विंड्स. ओके ना. सो that only is protecting our earth from the solar winds, and that is one. And another one you gotta learn is the gravitational force. earth की खुद की gravity तो रहती है, and gravity is such a force with which earth pulls everything towards its center. Now this force works and holds the full atmosphere and stratified layers together. Now if you had to explain this in like a good sentence, then you would say that the gravitational force of the earth, it holds the atmosphere, entire atmosphere together. Why? The earth has its own gravity or gravitational force by which the earth pulls everything towards its center, towards itself, and hence that is how it is pulling the atmosphere towards itself and holds it together, prevents it from being separated from each other. The stratified characteristic of the atmosphere is intact because of the gravitational force of the earth. समझ में आ गई बात? All right. We have a question in the exercise also about explaining this thing. Okay. Now atmospheric gases. Each gas in the atmosphere has its own unique property. तो atmosphere में जितने सारे gases हैं उसमें से हर gas का एक खुद का एक यूनिक प्रॉपर्टी है, वो सब हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट नाइट्रोजन. अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम नाइट्रोजन पार्ट में आएंगे तब मैं बोलूँगी नाइट्रोजन की इतनी क्या इम्पोर्टेंस है, इतनी क्या सिग्निफिकेंस है कि भले ही हमें ऑक्सीजन लगता है ज़्यादा, oxygen is way more important for us than nitrogen because it is used for breathing of living organisms. Still इतनी क्या significance है नाइट्रोजन की कि नाइट्रोजन हमारे एयर में ज़्यादा है. एक्चुअली आपके बुक में नाइट्रोजन के बारे में सिर्फ 2 सेंटेंस दी गई हैं, विच इज़ अ प्योर वेरी बैड थिंग. ओके, बट 2 सेंटेंस एनफ है, एक्सप्लेन करती है. बट जस्ट फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग जस्ट नो दिस. नाइट्रोजन फिक्सेशन नाम सुना है कभी? नाइट्रोजन फिक्सेशन. जो लोग ICSE क्लास 6 में पढ़ते थे, जो लोग अभी ICSE के 7 में आए हैं, उन लोगों को पता होगा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन आपके केमिस्ट्री में था. नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? जो पौधे होते हैं उनके ग्रोथ के लिए व्हाट दे डू इज़ दे पुल सम नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर बाय ईदर यूजिंग लाइटनिंग और बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. Alright, and this is for the growth of the plants. They require it for their growth. That's why the first point why ये होनी चाहिए. और देखो, हम ठीक रहे इसके लिए प्लांट्स का ठीक रहना बहुत ज़रूरी है. अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो प्लांट्स नाइट्रोजन कैसे लेंगे? और प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत है. वाई? बिकॉज दे कन्वर्ट द नाइट्रोजन इनटू प्लांट प्रोटीन and they consume that for their growth, and that when they do it by symbiotic bacteria, there's a bacteria in pea plant and all. So when they do it by symbiotic bacteria, we know it as nitrogen fixation. Now if nitrogen is not there, the plants will also not grow. But if plants are not there, how can we exist? Plants हमें ऑक्सीजन देगी ना. तो अगर प्लांट्स ही नहीं है तो ऑक्सीजन भी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो हम कैसे रहेंगे ना. तो इसलिए नाइट्रोजन एक ऐसे फूड चेन की तरह ही काम करती है. फूड चेन बहुत गलत होगा. नाइट्रोजन इज़ एसेंशियल. क्योंकि वो पौधों को अच्छी लगती है. पौधों
कि क्यों एसेंशियल है, क्योंकि पौधे हमें ऑक्सीजन देंगे और ऑक्सीजन हमें अच्छी रहेगी। सो इसलिए नाइट्रोजन पौधों की अच्छाई के लिए होता है। दे आर फॉर द ग्रोथ ऑफ द लिविंग बींग्स, दे आर in the living beings, they are as a important part like a biological molecules, बट ये पौधों की अच्छाई के लिए है और पौधे हमारी अच्छाई के लिए है। सो फर्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। सेकेंड पॉइंट विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इज दिस वन। सो बेसिकली यू सी नाइट्रोजन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग कंबस्शन। अभी आई हैव नो आइडिया इफ़ यू नो अबाउट कंबस्शन और नॉट, बट कंबस्शन इज़ अ वे लाइक नाइट्रोजन कंट्रोल्स कंबस्शन, मतलब कि कंबस्शन मतलब कि जलना, इट्स द बर्निंग। तो सपोज एक छोटी सी आग जब भी आप आग जलाओगे एवरीथिंग वुड कैच ऑन फायर वेरी इजीली, सब बहुत इजीली जल जाएगी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन नहीं रहेगी। नाइट्रोजन एक्चुअली कंट्रोल करती है कंबस्शन को और ऑक्सीजन सपोर्ट करती है कंबस्शन को। तो अगर सिर्फ ऑक्सीजन रहेगी और नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो क्या होगा, सब अच्छे से एकदम जल जाएगा। तो हम कैसे एग्जिस्ट करेंगे? आप लाइटर पकड़ते हो ना पकड़ते हो, सब जल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ लाइक, अच्छा मैं तो सपोर्टर हूँ कंबस्शन का, मैं तो सपोर्टर हूँ बर्निंग का, तो जो भी आप जला डालो। बट ऑक्सीजन क्या है, यही जो कंबस्शन का रेट है वो उसे डिफेंड करता है, वो उसे होने नहीं देता, वो उसे कंट्रोल करता है। So if nitrogen was not there, everything would catch on fire very easily because it controls combustion. And if nitrogen was not there, we would not be able to exist because nitrogen helps in the growth of plants and plants help in our growth. अच्छे से समझ आ गई बात? इसलिए नाइट्रोजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, बट ऑक्सीजन इज़ वेरी essential. Okay, now we now know about oxygen. So just let me do a reading. नाइट्रोजन इज़ अ वेरी लाइक द मोस्ट अबंडेंट गैस। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस गैस है। ये हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है एज अ पार्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के पार्ट में प्रेजेंट है। ये हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग बींग्स। नाउ कमिंग ऑन, आई होप दैट ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत लोग डाउट पे होते हैं कि क्यों ऐसा होता है, तो मैंने समझा दिया, दो इट्स आउट ऑफ सिलेबस। ओके, देन ऑक्सीजन, नाउ ये दिस कैन बी इन द सिलेबस ऑफ फ्यू पीपल, बट इन दिस बुक इट वाज नॉट देयर, so it's out of syllabus for this book, but still I explain because I felt this is important and this will clear your concepts about why nitrogen is more and oxygen is less in the atmosphere, though we need oxygen more. Okay, now oxygen, what is oxygen? Oxygen is a colorless, odorless and tasteless gas. Again, everything in the atmosphere is colorless, odorless and tasteless. ये थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस है उनके सबके लिए ही अप्लाई करते हैं। थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस। अभी बहुत इंपॉर्टेंट एक गैस है, बिकॉज वाई, बिकॉज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है दैट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, इसके लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अदर देन दैट, जोग्राफिकली अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, ऑफकोर्स स्ट्रेटोस्फीयर में ये जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में जाके ये ओजोन फॉर्म करती है। एक्चुअली ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, कोई हमें बता सकता है? ऑफकोर्स O3 होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? O2 मतलब कि O2 है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, क्योंकि ऑक्सीजन का एक एटम तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के काबिल है नहीं। तो सपोज यू से O2, सो O3 मतलब कि क्या? O3 मतलब कि 3 ऑक्सीजन एटम्स। सो ऑक्सीजन इज ओनली द वन हु फॉर्म्स द ओजोन मॉलिक्यूल्स। ओजोन मतलब कि 3 ऑक्सीजन एटम्स कम टुगेदर, ओजोन, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज इन द फॉर्म ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स इन द स्ट्रेटोस्फीयर, and this ozone molecules only comprise like the ozone molecules comprise the ozone layer, iska arth hai. So that is how it helps in growth. So basically now this oxygen molecules, it will be 3 oxygen molecules, it will form ozone. This each ozone layer, all many ozone layers will come together, coming together they will form the ozone layer जो है स्ट्रेटोस्फीयर में। नाउ दिस ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर, इट हाईली हेल्प्स इट बिकॉज इट absorbs, it radiates back all the UV rays, gamma rays, then you say X rays, which are harmful solar radiations. Okay, so ozone layer is the one doing that. So ozone layer is very important. So ozone layer is basically the upper part of the atmosphere.
This layer absorbs most of the harmful ultraviolet rays coming from the sun. So the ozone layer is the one who absorbs most of the ultraviolet rays which are coming from the sun. Ultraviolet radiations, not only ultraviolet, many solar radiations which are harmful. Alright, so this layer is the one which absorbs most of the ultraviolet radiations coming from the sun. Talking about argon we are going in order. Okay, this is the nitrogen is the most abundant, second abundant, third abundant, fourth abundant, fifth abundant, like that. And again there are many other elements like inert gases and all that. Inert gases are also present in pollen grains, jar smoke. इनके बारे में उन्होंने ज़्यादा बताया नहीं है. Anyways, carbon dioxide amount is increasing, but now in your textbook it is 0.04% given. Okay, but in older textbook it was 0.02% also. Alright, so carbon dioxide constitutes about 0.04% of the atmosphere. You have to remember these things. Okay, this is very important. Now argon I did not explain. Let me first explain argon also. Argon is a very small description of argon is given. Argon is the third most abundant gas in the atmosphere. Now basically 0.9% we say, but the exact amount is 0.93%. Here you have one more digit, 934%. Actually it's a non-terminating thing, so decimals so they can't be held. So 9.34% you have of air, argon. This argon is inert gas, means its stable octet is complete, and it has many industrial applications, means you can use it for many industrial applications. Alright, next, many industrial applications it can be used for. Many industries, many kinds of industries use argon for their own use. Okay, and then carbon dioxide 0.04%. I already told. During respiration carbon dioxide is released. Now when plants respirate, when most of the living organisms do respiration, they release, means they exhale carbon dioxide, CO2. Alright, now during photosynthesis what happens is, during photosynthesis plants take in carbon dioxide to produce energy. So what happens during photosynthesis? Plants are taking in CO2 just to produce energy, mainly glucose if you see it in biological terms, but now we are not talking about biology, right? Let's speak in geographical terms only. Alright, so during photosynthesis plants are taking in carbon dioxide to produce energy, and it is a significant contributor to the greenhouse effect. Greenhouse effect, in next chapter only we have greenhouse effect. Now greenhouse gases, what are their main function? Only 2 lines have been given. Greenhouse gases traps the sun heat and keeps the earth warm. So greenhouse gases, what they do is traps the sun's heat and keeps the earth's surface warm enough to sustain life. Water vapor is the main element of all weather phenomena on the earth. Okay, so देखो ये गामा रेज आ रही है सन से. ये डिड यू नो फैक्ट ही मैं आपको बता रही हूँ. ये बहुत सिंपल है तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. सो सन क्या देता है? पहले तो वो गामा रेज देता है ऑफ कोर्स, फिर ये यूवी रेज देता है, फिर ये एक्स रेज भी देता है, वाइट लाइट भी देता है, इंफ्रारेड यानी कि IF रेज बोलते हैं हम, इंफ्रारेड रेज भी देता है. तो इनमें से गामा रेज, एक्स रेज और यूवी रेज बड़े ख़तरनाक है और इनको ही अर्थ आने नहीं देता. सो ये लेयर आ नहीं पाते, दे आर फिल्टर्ड. बट वाइट लाइट और इंफ्रारेड रेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अर्थ इसको आने देता है. ऑलराइट, तो यहाँ पे एक सुंदर सा चार्ट दिया गया है where you have the explanatory diagram about the structure of the atmosphere. So you have mainly 5 structures, like 5 layers, stratified layers: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere. Thermosphere spelling यहाँ गलत है, E होगा यहाँ पे, and exosphere you have. Okay, अभी ये क्या होता है? ट्रोपोस्फियर में थोड़े से नीचे आपको माउंट एवरेस्ट मिलेगा, उसके थोड़े से ऊपर आपको क्लाउड मिलेगा. जो ट्रोपोपॉज है, मतलब कि ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के अंदर जो लेयर है, ऑफ कोर्स
बहुत अंदर नहीं बट अप्रॉक्स उसमें आपको एयरक्राफ्ट मतलब कि सारे हेलीकॉप्टर्स फिर एरोप्लेन्स ये देखने को मिलेंगे। रेडियो साउंड आपको मिल जाएगा स्ट्रेटोपॉस में, स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर के मिडल में। रेडियो साउंड क्या होता है, वो एक द लाइट बैलून्स होते हैं। इस बैलून्स में हीलियम होता है और हाइड्रोजन होता है। ये हम ऊपर भेजते हैं ताकि हम देख सकते हैं वेदर कैसा होता है, वेदर बलून्स की तरह ही, जो कि हमने ऑलरेडी मिसलेनियस यूजेस में पढ़े थे। वेदर बलून्स, मीटियोर्स यहाँ पे होते हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड कि मेसोस्फीयर जो होता है, मेसोस्फीयर और आयोनोस्फीयर, ये कॉस्मिक बॉडीज़ को वेपोराइज कर रहे होते हैं। तो ये जो कॉस्मिक बॉडी मीटियोर्स, मेटेरॉइड्स, ये सब आके मेसोस्फीयर में या स्ट्रेटोस्फीयर में वेपोराइज होते हैं तो और अर्थ के अंदर नहीं जा पाते हैं। थर्मोस्फीयर में आप स्पेस क्राफ्ट भेजते हो, यहाँ ही ऑरोरास दिखाई देता है। यहाँ के थोड़े से ऊपर में जाके आयोनोस्फीयर है। आयोनोस्फीयर में बहुत सारे आयन्स हैं विच कम टुगेदर टू फॉर्म So the presence of ions in the ionosphere forms different patterns of colored lights and hence forms auroras. दो टाइप्स का ऑरोरास होता है, ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है ना। उसके बारे में आपको डिटेल्स में नहीं बताया गया है चैप्टर में, तो हम नहीं पढ़ेंगे, जस्ट जान के रखेंगे। सैटेलाइट एग्जोस्फीयर में भेजा जाता है। एक्चुअली एग्जोस्फीयर एकदम क्लोजेस्ट लेयर है स्पेस के साथ। दैट इज़ द लेयर विच मर्जेस द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ विद द स्पेस। अभी ये पढ़ेंगे हम, टेबल है, बहुत सुंदर सा एक टेबल, जहाँ की हम सारे लेयर्स के बारे में थोड़े से डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, पहला है एटमॉस्फेरिक लेयर, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर एक्चुअली एक ग्रीक एक शब्द से आता है, जिसका जो शब्द है ट्रोपोस का मतलब है टू चेंज, बदलना, और टू सर्कुलेट करना, एक चीज़ को घुमाते जाना, एक चीज़ को रिपीट करना एक जगह से। ओके, तो ऑल्टीट्यूड क्या है, 16 to 80 किलोमीटर, 18 किलोमीटर्स अबव द इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर्स अबव द पोल्स और इक्वेटर के 16 to 18 किलोमीटर अबव है और पोल्स के 8 किलोमीटर अबव है। सो 16 to 18 किलोमीटर्स अबव द इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर्स अबव द पोल है इसकी ऑल्टीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ सर्फेस। ओके, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड देन सिग्निफिकेंस भी हम पढ़ेंगे। जो ट्रोपोस्फियर है, मैंने जितना बोला है आपको पहले ही बोला है जब हम डिस्कस कर रखे थे कि अर्थ सर्फेस के आप जितने पास होगे उतना आपको हैवी मिलेगा, डेंस मिलेगा एटमॉस्फेयर। तो इसलिए ही ट्रोपोस्फियर तो अर्थ सरफेस के सबसे करीब वाला एक लेयर है। तो यहाँ पे ये जो लेयर है ये सबसे लोएस्ट है, ये सबसे डेंसेस्ट है और ये सबसे हैवीएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर में। और ये सारे हैवी गैसेस को ही कंप्राइज करता है। बहुत सारे हैवी गैसेस है यहाँ पे, जैसे कि CO2 आपको मिल जाएगा, N2 मिल जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन, ये दोनों आपको मिल जाएंगे। ये हैवी है ऑफकोर्स। ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा। बहुत सारे गैसेस है ना, इसलिए भारी हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक मास बहुत है, 99% एटमॉस्फेरिक मास तो फर्स्ट 31 किलोमीटर्स में रहता है और ये ऑफकोर्स 31 किलोमीटर्स में से एक है। 16 to 18 किलोमीटर्स जाता है ये अबव इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर्स अबव योर दिस वन पोल्स। ऑलराइट, सो ये ही एक ऐसा एक लौता अच्छा, और एक चीज़, डस्ट पार्टिकल्स भी यहाँ होती है, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, जो भी हमने पढ़ा है कॉम्पोजिशन एटमॉस्फेयर का सब यहाँ पे ही होता है। सेकेंड लेयर से वैरी कर सकते हैं। अभी ये ऐसा एक लौता लेयर है विच इज़ हायर अबव द इक्वेटर एंड लोअर एट पोल्स। तो ऐसा एक लौता लेयर है एटमॉस्फेयर में जो कि विच इज़ हायर अबव द इक्वेटर से ऊपर जाओगे तो हायर है और ये पोल्स में से लोअर है। जैसे कि पोल्स में से 8 किलोमीटर है, एक पोल्स के अबव ये 1 किलोमीटर मिलेगा, इक्वेटर के अबव 16 to 18 किलोमीटर मिलेगा। तो ऐसा एक लौता ऐसा एक एटमॉस्फेयर का लेयर which is higher above the equator and lower above the poles. Now this is which absorbs maximum terrestrial radiation. Now the troposphere is only absorbing all the terrestrial radiations which we are getting from the sun. So you see all the terrestrial radiations, all of them, they are actually taken
by this troposphere. So troposphere is responsible for absorbing all maximum amount of terrestrial radiations from the sun. Air becomes rarefied with an increase in altitude. What is rarefied? Rarefied means लैक ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ से ट्रोपोस्फियर से आप जितना ऊपर जाओगे, ट्रोपोस्फियर में भी तो एक लेयर है, तो आप जितना ऊपर जाओगे ट्रोपोस्फियर में उतना एयर रेरिफाइड होगा, मतलब कि उतना एयर ऑक्सीजन कम होगा एयर में, उतना देयर विल बी लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर. सो एयर बिकम्स रेरिफाइड विद एन इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड. तो जितना आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जाओगे एयर रेरिफाइड होता जाएगा, देयर विल बी सम इंक्रीज. सो एयर एक्चुअली इट बिकम्स रेरिफाइड विद द इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड. I hope you understood these 3 points. Very simple points हैं. Okay. The points are just stating very simple things like this, that it's the lowest, densest and heaviest layer. It has all the heavy gases like CO2 and the N2. Then it has carbon dioxide. It has water vapor. Then it is the only layer which is higher above the equator and lower above the poles. And air becomes, in this layer, air becomes rarefied with an increase in the altitude. What is the significance? What is the importance? It's a very common question. State the significance of troposphere, or state the significance, then they'll say the name of any layer of the atmosphere. So this should have a idea. So see, it is a layer of change. That's why the name troposphere. It's from a Greek word, of course, tropos, which we studied. It means change or to circulate. So basically this is a layer of change. As the name signifies, all the weather phenomena takes place in this layer. All types of weather phenomena takes place in this layer. Since air becomes rarefied, मतलब कि air में जितना आप ऊपर उठोगे, एयर बिकम्स रेरिफाइड विद एन इंक्रीज इन द ऑल्टीट्यूड. जितना आप ऊपर उठोगे ऑक्सीजन कम होता जाएगा एयर में. इट्स टेम्परेचर फॉल्स एज हाइट इंक्रीजेज. मीन्स जो टेम्परेचर है वो कम होती जा रही है, वो ठंडी होती जा रही है जैसे कि हाइट इंक्रीज़ कर रहा है. तो जितना आप इंक्रीज़ करोगे हाइट, उतनी आपकी टेम्परेचर कम होती जाएगी. तो जहाँ पे ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे ऑफकोर्स रेरिफाइड हो जाती है एयर, उसके साथ ज़्यादा ऑल्टीट्यूड में आपको लो टेम्परेचर मिलेगी. टेम्परेचर इज़ फॉलिंग एज द ऑल्टीट्यूड और द हाइट इज़ इंक्रीजिंग. क्यों होता है ये? सिंस रेरिफाइड एयर अब्जॉर्ब्स लेस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. एक्चुअली एयर जितनी रेरिफाइड होगी वो उतनी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कम अब्जॉर्ब करेगी, इसलिए ही ये होता है. सो सिंस एयर बिकम्स रेरिफाइड with an increase in the altitude, the temperature falls with the increase of the height or in the altitude of the atmosphere. Since rarefied air absorbs less terrestrial radiations, okay, this rate of decrease of temperature with an increase of altitude is roughly 6 degrees. तो क्या होता है, ये जो डिक्रीज़ है टेम्परेचर में डिक्रीज़ है, जितना ऑल्टीट्यूड बड़ा होता जा रहा है उतना टेम्परेचर कम छोटा होता जा रहा है. तो दिस इज़ ईच, जब आप जाते हो 1 altitude, so this increase in altitude is roughly for 6 degrees Celsius for every 1000 meter. Every 1000 meter you go. Suppose I am at this mountain, I'm at this peak. This is 2000 meter. I go to 3000 meter. कितना गई हूँ मैं? बेसिक मैथ्स. कितना गई हूँ मैं कितना ऊपर गई हूँ, ज़्यादा कितना ऊपर गई हूँ? इस पॉइंट से 2000 पॉइंट से, सॉरी 200 लिख दिया मैंने. तो 2000 पॉइंट से 3000 पॉइंट तक मैं गई हूँ. कितना इंक्रीज गई हूँ? 1000, क्योंकि 3000 माइनस 2000 करेंगे तो 1000 मीटर में ऊपर गई हूँ, राइट. और इसके साथ रफली मेरा जो टेम्परेचर है यहाँ पे, सपोज़ यहाँ पे अगर सपोज़ ये जो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, तो यहाँ पे ये प्रोबेबली एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पे एक्चुअली बढ़ता नहीं है, मैंने देखा है बढ़ता है, कमता है. सो सपोज़ फिर से सेम एग्जांपल लूँगी. 2000 मीटर मैं हूँ यहाँ पे, मैं और मेरी दोस्त हम ट्रैकिंग कर रहे थे. हम 2000 मीटर पे पहुँच गए हैं. थोड़ी देर बाद हम 3000 मीटर पे भी पहुँच जाते हैं, मैं और मेरी दोस्त.
तो हम कितना चले हैं 1000 मीटर. वेरी बेसिक मैथ्स, वी शुड अंडरस्टैंड दिस. तो सपोज जब हम 2000 मीटर पे थे, सपोज हमारा जो टेम्परेचर था वो था 16 डिग्री सेल्सियस. जब हम 1000 मीटर और ऊपर गए तो ये अप्रॉक्स डिक्रीज़ हुआ 6 डिग्री सेल्सियस. तो अभी अप्रॉक्स 10 डिग्री सेल्सियस हो गया है, ठीक है ना. तो जितना एक 1000 मीटर आप छलांग देते हो और 6 डिग्री सेल्सियस आपका कमता है. तो बेसिकली जितना आप ऊपर जाओगे उतना आपका टेम्परेचर कमेगा. सो दिस इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट, 1000 मीटर ऑफ एस्केंट, एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट. एंड इसलिए इट मेक्स माउंटेन फ्रोजन इवन एट लोअर ऑल्टीट्यूड. Alright, so this is why mountains are even frozen even if it's a lower altitude. So ये जो paragraph है, it's very important and it's very understanding paragraph. I can explain you without even seeing the book now. Since air becomes rarefied with an increase in the altitude, its temperature falls as the height increases or the altitude increases. Since rarefied air has less probability of absorbing terrestrial radiation, that's why. Now the rate of decrease of temperature with the increase of altitude is roughly 6 degrees Celsius for every 1000 meter of ascent, and this is known as what? Normal lapse rate. So if you're told to define normal lapse rate, what will you write? From here, this rate to normal lapse rate. Okay, and if you told why mountains are frozen even at low altitude, you write about the normal lapse rate. So the rate of decrease in temperature with the rate of increasing altitude or increasing height is approx 6 degrees Celsius with every 1000 meter of ascent, and this is known as normal lapse rate. This is why mountains are frozen even at a lower altitude. Okay, this is what you can write. Next page, if we go to, more is there. The absorption of heat, significance only. The absorption of heat by this layer is a positive greenhouse effect which has helped maintain optimum temperature on Earth for survival of some life forms. So this absorption of heat troposphere performs absorption of heat, which helps the atmosphere, which helps the Earth maintain an optimum temperature required for the existence of natural life forms on it. Presence of moisture and dust particles assists in propagating the water cycle. तो क्योंकि यहाँ पे moisture है, क्योंकि यहाँ पे dust particles है, तो ये क्या करता है, water cycle जो propagate करता है, water cycle जो spread करता है, इसमें help करता है. So presence of moisture and dust assist in the propagating of the water cycle. So presence of moisture and dust assist in the propagating of the water cycle. Oxygen and carbon dioxide, CO2 and O2 of this layer is consumed by all life forms on earth. तो ये जो है 2 layers ट्रोपोस्फियर में होते हैं और ये इस लेयर को ही हम हमारे लिए बहुत नेसेसरी है ये लेयर. ट्रोपोपॉज के बारे में पढ़ते हैं. ट्रोपोपॉज 11 to 20 किलोमीटर्स के बारे में जाता है, 9 किलोमीटर्स अप्रॉक्स. इसका एक ही चीज़ है, कांस्टेंट एक टेम्परेचर मेंटेन करता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता वेरिएबल की तरह. और it's a boundary between troposphere and stratosphere. Okay, it's a boundary, tropopause, it's a boundary between troposphere and stratosphere, and you will find no convection over here. Alright, so it's a boundary between troposphere and stratosphere, you will find no convection over here. Then you have stratosphere. It's up to 50 kilometers above the earth's surface. Okay, from the earth's surface, yeah, it's up 50 kilometers. ये जो लेयर है, रेयर है, ये लेयर रेडिफाइड है, मतलब कि यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा ऑक्सीजन ज़्यादातर, और इसमें ओजोन मिलेगा. ऑक्सीजन मिलेगा बट ओजोन के फॉर्म में, जो कि आप ब्रीथ नहीं कर सकते. ओजोन आपके कोई काम की बात नहीं है, ह्यूमंस के कोई काम की नहीं है ओजोन. ऑलराइट, ओजोन एंड ऑक्सीजन इज़ नॉट सेम. Ozone is a molecule of oxygen containing 3 atoms, while oxygen is a molecule itself, which is a what? It's a diatomic molecule. So that's why it's not seen. Okay, so it contains ozone, mainly concentrated in upper layers. Temperature ranges from 51 degrees Celsius near tropopause to -15 डिग्री सेल्सियस नियर स्ट्राटोपॉज. मैंने बोला ना, जितना ऊपर जाएगा उतना आपका
टेम्परेचर कम होता जाएगा. देयर इज़ अ डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ 6 डिग्रीज रफली विथ एवरी 1000 मीटर इंक्रीज इन टेम्परेचर. आई होप ये टॉपिक तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है. दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी पॉइंट टू यू. दैट्स वाई योर कॉन्सेप्ट्स आर बिकमिंग सो क्लियर एंड सो स्ट्रॉन्ग दैट यू विल नेवर फॉरगेट देम एवर अगेन. ऑलराइट. तो क्या है, ट्रोपोपॉज के करीब अगर आप आओगे तो 51 डिग्री सेल्सियस आपको मिलेगा. ट्रोपोपॉज से अगर आप दूर जाओगे स्ट्रेटोपॉज के पास, स्ट्रेटोपॉज अगर स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर का है, -15 डिग्री सेल्सियस आपको मिलने वाला है. Easy peasy concept. Yes, easy peasy concept. So, temperature ranges from 51 degrees Celsius near tropopause to -15 degrees Celsius to near stratopause. Stratopause क्या होता है? स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर में जो बाउंड्री होती है वो. कैरेक्टराइज बाई इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि ये एक लौटी एक ऐसा एक कैरेक्टरिस्टिक्स है स्ट्रेटोस्फीयर का. मतलब कि हम इतनी देर क्या पढ़ते आए हैं, जितना ऑल्टीट्यूड बड़ा होगा, जितना ऑल्टीट्यूड ज़्यादा होगा उतना आपका टेम्परेचर कम होगा, राइट. बट यहाँ पे एक चीज़ ही उल्टी जा रही है. आप अगर आप मेरे को पूछोगे ना कि मैम वो नीचे ही जब मैं बाहर चल रही थी तभी अप्रॉक्स 16 डिग्री सेल्सियस था और जितना आप उठोगे उतना तो कम होने वाला है, तो यहाँ पे तो कितना ज़्यादा हो गया 51 डिग्री सेल्सियस. क्यों? बिकॉज देयर इज इन्वर्शन इन टेम्परेचर. बहुत ऑल्टरनेटिव हो जाता है ये. तो सडनली क्या होता है, यहाँ पे हॉट हो जाता है टेम्परेचर. देयर इज एन इन्वर्शन इन टेम्परेचर वेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली चेंज. सो कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल चेंज होती जा रही है. अभी तक कैरेक्टरिस्टिक क्या रही है कि जितना इंक्रीज़ होगा ऑल्टीट्यूड में उतना आपको टेम्परेचर में डिक्रीज़ होगा. यहाँ पे एकदम उल्टी सी बात हो गई है. स्ट्रेटोस्फीयर में पूरा एक इन्वर्शन हो गया. क्या होगा, जितना आप ऑल्टीट्यूड को बढ़ाओगे टेम्परेचर कमेगा नहीं, एक्सेप्ट टेम्परेचर बढ़ेगा ही. तो ये टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स की इन्वर्शन होगी ना. सो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इन्वर्शन ऑफ temperature. That is, temperature will increase with the increase of altitude due to the presence of ozone. तो ये जो inversion characteristics है, ये जो temperature का जो normal lapse rate का एक inversion characteristic है, ये किसके लिए है? O3 महान व्यक्ति O3 ओजोन के लिए है, राइट. इसके लिए है जो लेयर इन दी अपर रीचेस, जो अपर रीचेस में रहता है स्ट्रेटोस्फीयर के O3, यहाँ से ये शुरू होता है. Characterized by temperature inversion where temperature increases with an increase in altitude due to ozone. Now many people can say, ma'am, I have heard that planes and so many aircrafts, aeroplanes, they basically fly in the stratosphere, not in the troposphere. Ma'am, why? Because in stratosphere you'll get little turbulence. Okay, you'll get little turbulence in the stratosphere, and this little turbulence in the lower layer and the absence of weather phenomena, क्योंकि weather phenomena अगर होगा तो प्लेन चलाना बहुत ही रिस्की हो जाएगा नहीं, और troposphere में weather phenomena है. So little turbulence and absence of weather phenomena in the layer of stratosphere makes it suitable for air navigation. Perfect answer to the question why aeroplanes and jets fly in the stratosphere. Okay, अगर बोला गया है फ्लाई इन द स्ट्रेटोस्फीयर एंड नॉट इन द ट्रोपोस्फीयर, तो टर्ब्यूलेंस की बात लिखने की बहुत ज़रूरत नहीं है. अगर बोला गया है कि ट्रोपोस्फीयर में नहीं उड़ती पर स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ती है, क्यों? क्योंकि ट्रोपोस्फीयर में देयर आर वेदर फिनोमेना विच मेक्स इट रिस्की फॉर द प्लेन्स एंड जेट्स टू फ्लाई इन इट, एंड स्ट्रेटोस्फीयर हैज़ नो वेदर फिनोमेना. तो जब अगर रेस्पेक्ट टू ट्रोपोस्फीयर में क्यों नहीं उड़ती वो लिखा हुआ है तो ये देना. अगर लिखा हुआ है कि जस्ट सिंपली कि स्ट्रेटोस्फीयर में ही क्यों उड़ती है, ट्रोपोस्फीयर में क्यों नहीं उड़ती, मेसोस्फीयर में क्यों नहीं उड़ती, ये अगर एड्रेस नहीं किया गया है, जस्ट एड्रेस किया गया है कि स्ट्रेटोस्फीयर में क्यों उड़ती है, देन यू हैव टू मेंशन नॉट ओनली लिटिल टर्ब्यूलेंस बट वन मोर एक्स्ट्रा पॉइंट यू कैन ऐड विच विल इंक्रीज योर मार्क्स, दैट लिटिल टर्ब्यूलेंस से यहाँ लिखा हुआ है एंड absence of any weather, any. So, and what will be your answer? Little
If you write point twice, your answer will be little turbulence. So little turbulence तो बहुत ही हेल्पफुल है, थोड़ी सी टर्बुलेंस रहनी चाहिए इसमें, तो इसलिए हो रहा है. डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग, मैं बोल यू कैन नोट इट डाउन. एंड वन मोर थिंग इज दैट absence of any kind of weather phenomena. So little turbulence and absence of any kind of weather phenomena in the stratosphere makes it suitable for air navigation. That is the answer to your question. Stratopause 55 किलोमीटर 5 किलोमीटर की होती है, ठीक है, जस्ट 5 किलोमीटर. कांस्टेंट टेम्परेचर होती है यहाँ भी अराउंड 55 डिग्री सेल्सियस आपको मिल जाएगी. तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, 55 किलोमीटर पर ये जाती है, 55 डिग्री सेल्सियस की कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करती है. एंड दिस इज द जोन ऑफ ट्रांजिशन ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर टू मेसोस्फीयर. ऑलराइट, मेसोस्फीयर एक्चुअली क्या है? मेसोस्फीयर 85 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सर्फेस है. ये एटमॉस्फेयर की सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. टेम्परेचर डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड अगेन. नाउ जो एक बात आप बताओ कि एक ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, जितना आप ऑल्टीट्यूड इंक्रीज़ करोगे उतना टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा. स्ट्रेटोस्फीयर में उल्टी बात हो गई, जितना आप ऑल्टीट्यूड इंक्रीज़ करोगे उतना टेम्परेचर का भी इंक्रीज़ होगा. फिर यहाँ से उल्टी बात हो गई, ट्रोपोस्फीयर की बात हो गई यहाँ पे भी, जितना आप ऑल्टीट्यूड इंक्रीज़ करोगे फिर से ये डिक्रीज़ होगा. तो ये बहुत इन्वर्शन मेथड पे चल रहा है. ये यहाँ यहाँ ऑल्टरनेटिव मेथड में चल रहा है. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इन्वर्शन का, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का इन्वर्शन का, ये आपको याद रखना है, ऑल्टरनेटिव है. ट्रोपोस्फीयर में जो होता है मेसोस्फीयर में भी वही होता है, बट ये दोनों में जो होता है स्ट्रेटोस्फीयर में उसका एकदम से उल्टा होता है, ठीक है ना. सो टेम्परेचर डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड विद द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ -90 डिग्री सेल्सियस एट द अपर एंड. अगर मेसोस्फीयर के एकदम ऊपर आप पहुँच गए, मेसोस्फीयर सपोज इतना बड़ा है, यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा मेसोस्फीयर का. एकदम जो अगर वो ऊपर पहुँच जाते हो तो एकदम लास्ट जो टेम्परेचर रहता है वो है -90 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ही ठंडा है, आप तो बच ही नहीं पाओगे वहाँ पे. सो इट्स एट द अपर एंड. नाउ मेसोस्फीयर इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर वेपराइजिंग द कॉस्मिक बॉडीज इन द अपर लेयर, वेपराइजिंग द मीटियोर्स, मेटेरॉइड्स एंड द अदर कॉस्मिक बॉडीज in the upper layer. We have already reached we've already studied in the protective uses that mesosphere and ionosphere help in this. Right now, talking about the mesopause, just the mesopause is the like zone of transition between mesosphere to the thermosphere, and mesopause